ओके बच्चों, ग्लोबलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हम पढ़ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का ये चैप्टर है और हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि कैसे बिजनेसेस जो हैं वो ग्लोबल मार्केट्स में एंटर हो सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है पहला वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है बिजनेसेस के लिए। अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती क्या है? International marketing is selling products in the market other than the original domestic market. Other than original domestic market. अच्छा, अब बहुत सी फर्म्स हैं वो लोकल मार्केट में बिजनेसेस कर रही होती हैं, बट देयर आर मल्टीपल रीजंस बिकॉज विच दे मूव फ्रॉम द लोकल मार्केट्स टू इंटरनेशनल मार्केट्स। और देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। फॉर एग्जांपल देयर लोकल मार्केट हैज सैचुरेटेड, फॉर एग्जांपल they find it more profitable in the international to operate there. तो हम लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फैक्टर्स जो कि हो सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में मूव करने के लिए। जैसे कि पहले मैंने बताया कि सैचुरेटेड home or domestic markets. If you realize that every possible consumer has purchased your product, yeah, there are no more customers in your home market, so then what you can do, you can move to the other markets. तो अगर मिसाल के तौर पे दूसरी रीजन सैचुरेशन की भी हो सकती है कि देर आर टू मेनी कंपेटिटर्स इन द लोकल मार्केट। लोकल ब्रांड्स इतने ज्यादा हैं और लोग उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, लोकल टेस्ट के ऊपर बहुत। तो फिर आप के लिए दिस इज द राइट टाइम टू मूव टू द अदर कंट्रीज टू, जहाँ पे फ्यू कंपेटिटर्स हों। सेकेंडली, मैंने आपको बताया कि देयर माइट बी हाई प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज इन द अदर कंट्रीज। क्योंकि अगर बहुत रैपिडली सेल्स ग्रो करेंगी इन अदर कंट्रीज तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल रियलाइज दैट प्रॉफिट विल आल्सो ग्रो इन द अदर कंट्रीज। बहुत से मुल्कों में बहुत सी रीजंस हो सकती हैं प्रॉफिट की। मिसाल के तौर पे देयर माइट बी low cost of production in the other countries. There might be cheap labor in other countries. There might be low property cost in other countries. There will be less capital investment in other countries when it comes to the cost. For example, interest rate भी low हो सकते हैं. So there are many reasons because which the profit of other country might be higher और आप वहाँ पे जाके operate करना चाह रहे हो. फिर sometimes people move to the other countries to spread the risk. डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है कि if you move to one market, if you operate in one market only, there are likely chances that if you get fail to you get fail in that market and that's it. But if you move to the other markets, what will happen that if you fail in one market, no worries, you can be successful in the other market. That is the reason economic students study that the public limited companies operating as multinationals can charge very low price in other countries and other markets because they are capable of spreading the risk to the, spreading the chances of failure to the other markets too. There is another reason, that is poor trading conditions in home market. For example, in an economy, there is not much support of the businesses from the government side. In fact, government is charging high taxes, not developing infrastructure for the businesses and problems like that. The businesses might decide to move to the other countries. And legal differences are creating opportunities. The laws in other countries are favorable
For example, you operate in a tobacco business and tobacco is being banned in one country, but the other country is not banning tobacco, and they are do not the governments do not have any intentions to do that. So what you can do, you can move to the other countries. These are the few reasons. There is a concept that we need to study. Let's study that and then we'll move to the next topic, that is BRICS countries. That is related with the movement to the other countries. And usually when we are tested a question in P3, we are asked to compare the data of BRICS countries with the other countries in which we want to operate. For example, Mohsen sees a question ke, Acha ji, the interest rate in for example, one country like USA is 3% and interest rate in BRICS countries is 5%. So in which country do you want to operate? Yeah, exchange rate in Canada is this and exchange rate in BRICS countries is this. तो आप कौन से country में move करना चाहेंगे? इस हवाले से we must have an information about the BRICS countries. BRICS is basically abbreviation of the five rapidly most developing countries around the globe. We were saying originally that these countries will become global leaders in 2050, but now this statement has become a little objected. So let's talk about simply कि BRICS are those countries जो कि बहुत ज्यादा तेजी से बहुत rapidly grow कर रहे हैं और उनमें the opportunities of businesses are high. These BRICS stands for Brazil, Russia, India, China, and South Africa. तो हम इसको इस पर्सपेक्टिव में ब्रिक्स को पढ़ते हैं कि दीज आर दी मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज, वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज अराउंड द ग्लोब, और इनमें जो है बड़ा फायदा है हमें बिजनेस करने का, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं. तो वन ऑफ द रीजन ऑफ मूविंग टू द इंटरनेशनल मार्केट इज एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज टू.